Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Jyoti Education Point. Let's continue with the accounting of holding company. As we have, I have delivered the various lectures on the accounting of holding company. Please watch my previous session, then so that you will able to understand this session. Now let's continue with the debentures in the holding company. As we have done the preference share capital in the subsidiary company, equity share capital in the subsidiary company, the treatment of the accounting treatment of the debentures in the subsidiary company is same as that. The sum of the proportion of the debentures may be held by the holding company, and the sum of the proportion of the debentures is held by the minority shareholders. So the amount of the debentures held by the holding company and the amount of the debentures held by the minority interest. Now, whatever amount is belongs to the holding company, it should be adjusted in the cost of control. While we are doing the calculation of the cost of control, it should be adjusted. And the minority interest, while we are the amount of the debentures is held by the minority interest, it should be appear as a separate item in the consolidated balance sheet. Now, it is not adjusted in the minority interest. The amount of the debentures held by the minority interest, it is not adjusted in the minority interest while we are calculating the minority interest. Now, this time it would be appear as a separate item in the consolidated balance sheet. ठीक है, इसको इस बार आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे एज यू हैव डन इन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द इक्विटी शेयर कैपिटल. नाउ यू विल शो इट एज अ सेपरेट आइटम. दिस इज रिलेटेड टू योर डिबेंचर्स इन द सब्सिडरी कंपनी. डिबेंचर्स इन द सब्सिडरी कंपनी इट मीन्स कि यहाँ पर अब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है. तो दिस इज योर treatment of debentures in subsidiary company. Next treatment is related to your revaluation of assets. Revaluation of assets, because revaluation of assets, it means you are assessing, you are calculating the market value of your assets. You are revalue your assets. While you revalue your assets, there may be a case that there is a chances of increase in the value of assets. There is chances of decrease in the value of assets. If there is an increase in the value of assets, it is your capital profit. It is the nature of capital profit, increase in the value of assets. And if there is an decrease in the value of assets, it is a capital loss. It is a capital loss. तो कैपिटल लॉस है आपका एंड इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट. द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा वो किस में ऐड ऑन होगा? कैपिटल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. इट इज़ एड ऑन टू द कैपिटल प्रॉफिट. एंड अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो it will be subtracted from the capital profit. Capital profit, it means this is your pre-acquisition. Pre-acquisition profits होते हैं, pre-acquisition surplus होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं. प्री एक्विजिशन जितने भी होते हैं वो आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं. एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, ये दैट इज योर रिवेन्यू रिजर्व्स. दैट इज योर रिवेन्यू रिजर्व्स. तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है प्रॉफिट होगा तो दैट विल बी एड ऑन टू द कैपिटल रिजर्व्स. प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में ऐड ऑन हो जाएगा, प्री एक्विजिशन सरप्लस में ऐड ऑन हो जाएगा. अगर लॉस है तो प्री एक्विजिशन सरप्लस में से माइनस हो जाएगा. नाउ as the value of assets increase, the depreciation charge will also increase. The depreciation charge would be increase, and the depreciation as the value of the assets decrease. जब आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज होगी, इन दैट केस द डेप्रिसिएशन वुड बी डिक्रीज. डेप्रिसिएशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो व्हाट वी विल डू, तो आपका क्या होगा? डेप्रिसिएशन
इज डेप्रिसिएशन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ योर रिवेन्यू। ये आपका कहाँ से डिडक्ट होगा? रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से डिडक्ट होगा। अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है तो ये जितना पोर्शन इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट्स। एंड in case of the value of the asset decrease, the depreciation charge would be decrease, तो डिक्रीज होगा, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, इट विल बी एडेड टू द revenue profits of the subsidiary company, it will be added to the revenue profits of the subsidiary company. तो व्हेन यू आर डूइंग द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टू कॉन्सेप्ट है। अगर वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंक्रीज होगी तो एट द सेम टाइम द डेप्रिसिएशन वुड ऑल्सो इंक्रीज। देयर इज अ टू ट्रीटमेंट, one for the increase in the value of assets and the second for the depreciation would be increase, ठीक है। at now there is a second case, there is a second situation, value of assets decrease, value of assets decrease होगी तो depreciation would also be decrease। next is bonus shares। bonus shares, now subsidiary company issue bonus shares. Bonus shares, it means free of cost. The company issue the bonus shares to their shareholders, to their existing shareholders. When the company don't pay the dividend to their shareholders, in some situations the company don't pay the in case company don't have the sufficient cash balance, in that case the company issue the bonus shares to their shareholders. There is a two kind of situation. The company can issue the bonus shares out of pre-acquisition profit, or the company can issue bonus shares out of post-acquisition profits. तो there is a two cases, the pre-acquisition profits में से भी इशू कर सकते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में भी इशू कर सकती है। तो now let's start. When the subsidiary company issue the bonus shares, it would increase the number of shares, obvious है, कंपनी क्या कर देगी, increase number of shares would be increase with the holding company, that is automatically increase in the paid up value of the shares held in this subsidiary company. Now bonus shares issued from the pre-acquisition profits and the post-acquisition profits. बोनस शेयर्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हों या फिर बोनस शेयर्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हैं, द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो जितने अमाउंट के हमने बोनस शेयर्स इशू करे हैं वो अमाउंट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने शेयर्स हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से, जितने अमाउंट के बोनस शेयर्स इशू करे हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से डिडक्ट हो जाएंगे। And in case of the post acquisition profit, that is your revenue profit, तो जितने अमाउंट के बोनस शेयर्स हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से इशू करे हैं तो वो किस में ऐड हो जाएंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी ऐड ऑन टू द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। now the second treatment is added to the share capital of subsidiary company. As you know that number of shares will be increased, it means automatically the share capital will be increased, automatically the share capital of subsidiary company will be increased. Now the same treatment in case of post acquisition profits, added to the share capital of the subsidiary company, added to the share capital of the subsidiary company. There should not be added the post acquisition profits में मैंने यहाँ बाय मिस्टेक है ये, the amount of bonus shares is subtracted from the post acquisition profit, this should be subtracted from the post acquisition profits, ठीक है, because we are issuing the bonus shares out of post acquisition profits. The bonus shares issued when the company does not have the sufficient amount of cash balance, in that situation the company
issue the bonus shares as a dividend to their shareholders. Because of the company issues the bonus shares, the number of shares will be increased, automatically the share capital will also increase. That's why the share capital of the subsidiary company will be increase. And in case the pre-acquisition profit से issue कर रही है, तो amount of the bonus shares will be deducted from the pre-acquisition profits. If the company issue the bonus shares out of post-acquisition profits, the amount of bonus shares will be deducted from the post-acquisition profits. That's it. Thank you for the today's class. Thank you for watching my videos.